This is fourth video of series. In this video, I have covered typical questions. Typical in the sense that those questions which always troubles the students. Actually, these are those questions which cannot be solved with a single operation like multiplication, division, addition, subtraction, etc. So we have to apply more than one operation to solve these type of problems. तो ये चौथा वीडियो मैंने बनाया है सीरीज के ऊपर और इसमें कुछ खास किस्म के मैंने सवाल लिए हैं। ये असल में वो सवाल हैं जिसमें अक्सर बच्चों को हल करने में प्रॉब्लम आती है। इनमें असल में हमें सलूशन फौरन देखते ही नजर नहीं आता है, क्योंकि इसमें खाली एक ऑपरेशन से ये सवाल हल नहीं होते। यानी गुणा, भाग, जोड़, घटाना, इनमें से कोई एक ऑपरेशन अगर लगाएं तो हल नहीं होगा। इसको हल करने के लिए हमें एक से ज्यादा ऑपरेशन लगाना पड़ते हैं, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ये 5 बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चन हैं। Well, this is the fourth question of the exercise which I had given to solve the students. So the numbers are 5, 12, 23, 50, 141 and the next number is missing. So we have to find out this number out of these four options. देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये चौथा सवाल है उस एक्सरसाइज का जो मैंने आप लोगों को हल करने के लिए दी थी। तो सीरीज है 5, 12, 23, 50, 141 और इसके बाद एक स्थान खाली है। यहाँ पे इन 4 उत्तरों में से किसी एक उत्तर से इसको भरना है। तो देखिए सबसे पहले जो जनरल तरीका है जो हमें अक्सर यूज करना चाहिए वो ये कि जो सीरीज के टर्म्स हैं, जो पद हैं, उनका अंतर निकाल के देखना चाहिए। उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। तो 5 और 12 के बीच का अंतर 7 है, 12 और 23 के बीच का 11 है, 23 और 50 के बीच का 27 है, 50 और 141 के बीच का 91। तो अब देखिए अभी भी एक डिफरेंस निकालने के बाद पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है असल में यहाँ पे क्या हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक बार और डिफरेंस लेना चाहिए, यानी डिफरेंस का भी डिफरेंस। तो देखिए अगर इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट किया यानी 11 में से 7 तो 4 आया, 27 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया 16 आया, 91 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया तो 64 आया। अब हमें कुछ रास्ता नजर आया। अब जो सेकंड डिफरेंस है ये 4 था, फिर 16 हुआ, फिर 64, यानी 4 गुना बढ़ रहा है। पिछले पद का अगला पद 4 गुना। तो इस हिसाब से अगला 256 होना चाहिए। तो देखिए अगला पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें ये 27 जैसे था, 64 जोड़ा तो मुझे 91 मिल गया। तो ऐसे ही अब हम अगला पद निकालेंगे। तो 91 में 256 अगर हम ऐड करेंगे तो 347 आए। अब ये 347 अगर इस 141 में जोड़ दिया जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ मैंने करके दिखाया है। पहले मैंने डिफरेंस दिखाए हैं कि कैसे कैसे मैंने डिफरेंस लिए थे, और ये फर्स्ट उसमें मैंने जो डिफरेंस लिए हैं जो मैंने ब्लू कलर से दिखाए हैं। इसके बाद इन ब्लू कलर के डिफरेंस लिए हैं जो मैंने रेड कलर से यहाँ दिखाए। तो अब यहाँ पे जो ये टर्म्स आए उसमें क्या रिश्ता था वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ये 256 कैसे आया ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब देखिए जैसे 7, 4, 11, 11, 16, 27, 27 और 64, 91, इसी तरह 91, 256, 347, तो ये जोड़ के मैंने यहाँ पे सब दिखाया। तो इसी तरह अब 141 में 347 जोड़ेंगे तो अगला पता आएगा, क्योंकि जहाँ पे देखिए जैसे 50 और 91 था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 141 आ जाता है। ऐसे ही अगला पद निकालने के लिए 141 को इस 347 में जोड़ेंगे तो यहाँ वाला पद आ जाएगा जो हमें चाहिए था। तो यहाँ मैंने 141 में 347 जोड़ के दिखाया।
ये 488 आया। यानी हमारा उत्तर चौथा जो है यानी 488 यही सही उत्तर है. So in this type of questions where we cannot find straight away what will be the solution of the series, then the simplest option is that to get the differences of the terms of the series. So first of all, I find the difference between 12 and 5, that is 7. 23 minus 12, 11. 50 minus 23, 27. 141 minus 50, 91. But still, I'm not certain what type of series it is. So I found the next difference, yani second level of difference. That means I got the difference of differences. That means I subtracted 7 from 11. So I got 4. 27 minus 11, 16. 91 minus 27, 64. Now we find something. These differences are increasing 4 times. 4 for the 16, 16 for the 64. So next difference should be 4 times of 64. That is 256. So I put 256 here. Now, as we see, 27 plus 64 is equal to 91. And 11 plus 16, 27. 7 plus 4, 11. So same consequence we applied here. So 91 plus 256 is equal to 347. And now we see that 5 plus 7 is equal to 12, 12 plus 11, 23, 23 plus 27, 50, 50 plus 91 is equal to 141. Similarly, we can find the next term. That means 141 plus 347. So 141 plus 347 is equal to 488. So that is the next term which is required over here. That means the fourth option, 488, is the right answer. This is the sixth question of that paper which I had given to you from that exercise. So the question is 9, 5, 6, 10.5, 23, and we have to find the next term out of these four options. Again, this is a typical question because first of all it is decreasing and then increasing, and there is no clear indications what relations they have used between the terms. Neither we can get by dividing the two terms, nor multiplying, nor adding, nor subtracting. So in that kind of cases, we have to use some common sense and multiple operation. So what is the relation between 9 and 5? We see if we reduce 9 by half, we get 4.5. And if we add 0.5 in this one, we get 5. That means first of all, multiply 9 by half or 0.5 and add 0.5 to the product. So we get 5. So similar sequence we use in the next term. So 5 into 1 plus 1 is equal to 5 plus 1 is equal to 6. That means we have to increase these numbers which we had used from our side. Now 6 into 1.5 plus 1.5, 6 into 1.5 is equal to 9, and 9 plus 1.5 is equal to 10.5. So we got the next term, and again, so we are increasing this number by 0.5. 0.5, 1, then 1.5. Now I will use 2. So 10.5 into 2 is equal to 21, and then I added 2. So I got 23. Similarly, now I increase it again by 0.5. So I got 2.5. So 23 into 2.5 is equal to 57.5, and adding 2.5 we got 60. That means 60 is the next term which is required. And
दैट इज ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. तो देखिए यहाँ पे भी ये सीरीज बड़ी अटपटी थी. पहले 9, फिर 5, फिर 6, पहले यानी बड़ा टर्म, फिर घटा, फिर बड़ा. और ये जो बढ़ रहा है, सीधा रिश्ता इनके बीच में कोई नजर नहीं आ रहा. 9 और 5 एक दूसरे की टेबल में नहीं आते. ना हम जोड़ या घटा के अगर इनके बीच में सीधा जोड़ें या घटाएं तो अगला टर्म हमें मिलेगा. मतलब देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग है. तो ऐसे केस में हम मल्टीपल ऑपरेशन यूज करते हैं. तो हमें किसी तरह ये पता लगाना है कि 9 और 5 को कैसे आपस में इंटरकनेक्ट किया जा सकता है. तो हम इतना जानते हैं कि 9 का आधा 4.5 होता है. तो 4.5 5 से आधा कम है. देखिए कॉमन सेंस ने काम किया, रिश्ता बन गया. तो 9 को आधे से गुणा किया और आधा जोड़ दिया. कितना बना? 4.5 और आधा यानी 5. अब अगले टर्म में सेम रिश्ता काम नहीं कर रहा है. यहाँ पे अगर 5 का आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, और 2.5 में आधा जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा. तो हमें ये जो रिलेशन हमने निकाला इसको डबल करना पड़ेगा. 3 आया था, हमें लाना 6 है. तो हमने क्या किया, अब 0.5 की जगह 1 ले लिया. तो 5 एकन 5 और एक 6 हो गया. तो हमें नंबर मिल गया. अब हमें कड़ी मिलना शुरू हो गई. पहले 0.5 लिया था, फिर 1 लिया, अब 1.5 ले लिया. तो 6 और 1.5 मल्टीप्लाई किया 9 आ गए. उसमें 1.5 जोड़ा तो 10.5 हो गए, जो अगला टर्म है. तो अभी तक हम सही चल रहा है. अब इसका डबल कर देंगे. तो आधा आधा बढ़ाते चले जा रहे हैं. तो 10.5 में 2 से गुणा किया तो 21 मिला, और 21 में 2 जोड़ा तो 23 मिला. यानी ये टर्म भी मिल गया. सही, अभी तक सही जा रहा है. इसी तरह से हम अगला भी निकालते हैं. तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे ये जो गुणक है इसको बढ़ाया था, वैसे ही यहाँ भी बढ़ा दिया. 2 से अब 2.5 कर दिया. तो 23 को 2.5 से गुणा करेंगे 57.5 मिलेगा, और इसमें 2.5 और जोड़ेंगे तो 60 मिल जाएगा. 60 यहाँ दिया हुआ ऑप्शन 4 है. इसका मतलब 60 यानी चौथा ऑप्शन ही सही उत्तर है. So this is the 10th question of the given exercise. Again, this is a typical question. So first of all, the series is decreasing and then increasing, and there is no fixed number or direct relation between these terms. So we have to find out some clue. So the clue which we see is that 7 is very close to 8. So you can say this is approximate 1 times 8, and this is approximately 2 times, this is approximately 5 times. So we have to do some multiple operations to find the exact answer. So if we multiply 8 by 1 and subtract 1, we get 8 minus 1 is equal to 7. That is the next term. And when we multiply 7 by 2, we get 14. And when we subtract 2 from 14, we get 12. So this is the clue which was required. So next term should be 12 into 3. So we are increasing by one number. So 12 3 the 36. And if we subtract 3 from 36, we get 34. Now this is the middle term. So we can't stop here. We have to confirm whether the series formula is working in the next terms. So 33 for the 132 minus 4 is equal to 128. That's okay. Got the right term. Now 128 into 5 minus 5. So 128 into 5 is equal to 640. 640 minus 5 is equal to 635. That's done. We got the right series. 7, 12, 33, 128, 635. That means the required option should be the third one, that is 33. तो देखिए यहाँ पे सीधा ताल्लुक इन टर्म्स में कोई नजर नहीं आ रहा था. न तो कोई नंबर जोड़ने से हमें कुछ मिल रहा है, न घटाने से, न गुणा करने से, न भाग करने से. एक ऑपरेशन से काम नहीं बनेगा. तो ऐसे में क्या करेंगे, हमें एक से ज्यादा सोचना.
लेकिन हाँ, एक चीज हमें जरूर नजर आ रही है, 8 और 7 लगभग बराबर हैं। 7 का 12 दुगने के करीब है, दुगना नहीं है, तो कुछ घटाना भी पड़ेगा। यहाँ पे 128 का 635 लगभग 5 गुना है, थोड़ा कुछ घटाना पड़ेगा। तो हमने ये यहाँ पे होमवर्क किया। तो 8 में अगर 1 से गुणा किया जाए और 1 घटा दिया जाए तो 7 आ जाता है। तो पहला तो हमें ताल्लुक ये फिट बैठ रहा है। अब अगले में देखिए, अब यहाँ पे अगर 1 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 1 घटा देंगे 6 ही रह जाएगा। तो 6 तो इसका आधा है, तो हमने क्या किया, डबल कर दिया। तो 7 दूनी 14, और 14 में से 2 घटाए तो 12 मिल गया, यानी अगला टर्म। तो यही फार्मूला आगे भी काम करना चाहिए, तो हमने ट्राई किया। तो हमने क्या किया, 12 में अब 1 था, यहाँ 2 था, अब हमने 3 कर दिया। 12 3 36, 36 में से 3 गए 33। तो अब 33 यहाँ रख दिया, लेकिन आगे के टर्म्स में भी ये फार्मूला फिट बैठेगा कि नहीं, वो चेक करना बड़ा जरूरी है। तो देखिए 33 में अब जैसे 1 2 3 दिया था, आपके 4 लेंगे, 33 चौक 132, उसमें से 4 घटाए 128, फार्मूला काम कर गया। अगला टर्म भी सही आ गया। उससे अगला देखेंगे, 128 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ 4 था, 5 कर दिए और 5 घटा दिए, तो 640 में से 5 घटाए 635, काम बन गया। तो देखिए सीरीज पूरी ही आ गई, 7 12 33 128 635, यानी जो गायब टर्म था वो 33 था। यानी ये तीसरा जो ऑप्शन है 333, यही आंसर सही उत्तर है। So this is the 16th question of the same exercise. Again, it is a typical question. As we see, 3 6 7 14 15 30 31 62 63, and we have to find two terms. So this is interesting. So as we see, 6 is double of 3, 14 is double of 7, 30 15's double, and 62 31's double. So there should be same relation in the coming term. So first of all, I arrange these terms and we see the relation. See 3 6. So this is double of 3. 14 is double of 7. 30 is double of 50. 62 is double of 31. Now the next term is 63. So next term should be double of 63. That is 126. So 126 should be the next answer. But what should be the next one? So as we observe, after 2 times the term, we find the difference of 1. So 6 is increasing by 1 to become 7. And similarly, 14 is becoming 15, 30, 31, 62, 63. So there is a difference of 1 in the next term. So the same pattern should follow. So we should have 127 after 126 to follow the same pattern. So the two terms should be 126 and 127. That means the option 4, 126, 127 should be the answer. देखिए ये फिर एक अटपटी सीरीज आ गई। यहाँ पे 3 फिर 6, यानी इसका दुगुना हुआ, लेकिन फिर 7 इसका दुगुना नहीं है, एक का ही फर्क रह गया। अब 7 का दुगुना 14 आ गया, फिर एक का फर्क आ गया, 15 का दुगुना 30 आ गया, 30 से फिर एक ज्यादा आ गया, और फिर 31 का दुगुना, फिर इससे एक ज्यादा, और आगे दो टर्म गायब है, हमें दोनों पता करना है। तो सबसे पहले हमने इन टर्म्स को देखिए अरेंज किया और इनके जोड़े बना दिए। 3 का डबल 6 है, 7 का दुगुना 14 है, 15 का दुगुना 30, 31 का दुगुना 62। तो हमें देखिए यहाँ पे 63 से अगला ढूंढना था, तो 63 का दुगुना अगला होना चाहिए। यही अगर हम फॉलो करें, यहाँ भी जोड़ा बनेगा। तो 63 का दुगुना किया तो 126 हो गया, तो हमें एक टर्म मिल गया। अब यहाँ पे क्या है कि दुगने के बाद एक का फर्क है, 6 के बाद 7, ठीक है, 14 के बाद 15, 30 के बाद 31, 62 के बाद 63।
तो पहले दुगना आता है और फिर उससे एक ज्यादा आता है। तो 126 के बाद इससे एक ज्यादा यानी 127 आना चाहिए। तो 126 और 127 ये दो नए नंबर होंगे और ये है ऑप्शन ओ, 126 एंड 127। सो दिस इज द राइट आंसर, यही सही उत्तर है। Well, this is the 40th question of that exercise. And the numbers are 3, 6, 24, 30, 63, 72, missing number, and 130. Again, if we see, we observe it, we find that it is fluctuating like anything. 3 to the 6, 6 for the 24, but 24 and 30, no direct relation, just a difference of 6. So in these places, it was double, it was 4 times, but the same pattern is not following over here. And again, 30, 63, no relation, 63, 72, no relation. So the simplest method to solve these kind of problems, first of all, we should find the difference between the terms. So I found out the difference between these terms. So 3, 6 का difference 3, 6, 24 difference 80, 24, 30 difference 6, 30, 63 difference 33, 63, 72 difference 9. So we find some pattern now. So the alternate differences have a series 3, 6, 9. That means a difference of 3. And in these two terms, there is a difference of 15. So let us try the fluke. So the next term should be 15 plus 33. So that is 48. And if we use 48, then 72 plus 48 should be 120. So this term should be 120. Now, what should be the next number? 3, 6, 9, then 12. Because they are changing by 3. So 132 plus 12, 132. That's okay. We find the next term correct. That means the required number is 120, and that is the fifth option. So fifth option is the right answer. देखिए यहाँ पे फिर एक अजीब तरीके की सीरीज आ गई कि पहले 3 का दुगुना 6 हुआ, 6 का 4 गुना 24 हुआ। अब इस तरह की सीरीज आती है तो अगला फिर इसका अगर ये 4 गुना है तो फिर 16 गुना होना चाहिए इस हिसाब से। मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ 24 के बाद सीधा 30 आ गया और 30 के बाद 63, इनमें भी आपस में कोई रिलेशन नहीं। 63 के बाद 72, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं, गड़बड़ झाला। क्या करेंगे? ऐसे में सबसे जो कॉमन तरीका है, हमेशा याद रखिए कि इस टर्म्स का डिफरेंस ले लीजिए, कुछ ना कुछ आगे क्लू मिलेगा। तो हमने वही किया, इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले लिया, इनका अंतर। तो 6 में से 3 घटाया 3, 24 में से 6 गया 18, 30 में से 24 गया 6, 63 में से 30 गया 33, 72 में से 63 गया 9। अब हमें देखिए, ये मैंने कलर्ड इसलिए कर दिए कि 3, 6, 9 इनमें कुछ सीक्वेंस बन रही है। तो अगला क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। लेकिन इधर अभी भी बिल्कुल क्लियर तो नहीं है कि यही होना चाहिए। 33 में से 18 गए तो 15 है, तो हमने उठा के 15 इस 33 में जोड़ दिए तो 48 मिल गया। अब हम ट्राई करेंगे कि इसको जोड़ने से क्या मिलता है। तो इसको जोड़ने से 72 और 48 को जोड़ा तो 120 मिल गया। तो 120 यहाँ पे हमने रख दिया। तो अब जो पैटर्न था, बाकी के जो अल्टरनेट टर्म्स हैं, यानी एक के बाद एक जो आ रहे हैं एक के फर्क से, ये 3, 6, 9, तो अगला 12 होना चाहिए। तो अब हमने 120 जो लिया था, अब इसको ट्राई करेंगे कि इन दोनों को जोड़ के हमें ये मिलता है कि नहीं। तो 120 और 12 132 ही होता है। इसका मतलब यह है कि ये हमने जो अपनी तरफ से कारगुजारी की बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा सीरीज मुकम्मल हो गई। 3, 6, 9, 12 का अंतर इनमें हो गया और इधर 18, 15, 33, 33, 15, 48, तो दोनों अंतर सेट हो गए।
और सीरीज भी हमारी रूल को फॉलो कर रही है। तो ये सही उत्तर 120 है, यानी 5। Thanks for visiting my channel. I hope you enjoyed the solutions of these typical questions. If you like these questions, please share these questions with those students who are preparing for mental ability, because it may be useful for them. तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे ये सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो उन बच्चों के साथ जो मेंटल एबिलिटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। थैंक यू।